Yeah, so starting with antennas. Now, we know that in wireless communication, the main thing that is involved is getting rid of the wires, that is getting rid of the physical connections. So, you see, as the name suggests, wireless already indicates that getting rid of wires and transmitting signals through space without any guidance. So, काफी बार ऐसा होता है कि कोई मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस थ्रू सम टावर्स यू कैन convert radiations into electric signals and electric signals back into radiations for transmitting as and when needed. So somehow we have to couple the energy from this transmitter to the outside world, that is space, and then reverse from the outside world to the receiver. This is exactly what the antennas do. जैसे मैंने बताया था that काफी बार ऐसा होता है that you have to transmit that radiations into electric signal and back that electric signal into radiations again at the receiver side. That is nothing but a process which antennas does. So antennas basically क्या करते हैं, जो भी electromagnetic radiations होते हैं उनको electrical signals में convert करते हैं, which are useful for mobile communications. So antennas couple this electromagnetic energy to and from space, to and from wire और coaxial cables. यानी एंटीनास का काम ही होता है कि अगर ट्रांसमिट किया है तो सेंडर से वो स्पेस में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रेडिएशंस में कन्वर्ट होगा एंड ऑन द रिसीवर साइड क्या होगा, रेडिएशन से वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा. तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो पूरा प्रोसेस है, दैट हैज टू बी डन बाय द एंटीनास. So antenna is a device which can receive and radiate electromagnetic wave from one position to another. So as we discussed that antennas का basically काम ही होता है कि signal को transmit करना एक जगह से दूसरे जगह with conversions. There are different types of antennas. So based on the location or so based on the application, so decide कि following में से कौन सा antennas हमको, कौन से type का antennas हमको set करना चाहिए. So the first type of antenna is isotropic radiation. Isotropic radiation का मतलब होता है that it sends the signals or say it sends the radiation in all directions and that too equally. यानी आइसोट्रोपिक रेडिएशंस क्या होता है, वो ऐसे रेडिएशंस है जो अगर हम एक्स वाई और जेड एक्सिस देखें तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस सेंड करता है. A reference antenna is isotropic radiator, a point in space radiating equal power in all directions. यानी सारे directions में वो equal power से equally radiate करता है. That is, all points with equal power are located on a sphere with the antenna at its center. यानी ये antenna जो है वो center पे होता है और फिर वो center से सारे directions में हर same strength के साथ हर एक direction में radiations भेजता है. The radiation pattern is symmetric in all directions. Why we say it's symmetric? Because it is sending equally, radiating in all directions. We say it to be symmetric radiations. Radiation and reception of electromagnetic waves connecting wired system with satellite for radio transmission is called as isotropic radiation. यानी ऐसा रेडिएशन जो सेंड और रिसीव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, विच इज कनेक्टेड टू अ सैटेलाइट बेसिकली फॉर रेडियो ट्रांसमिशंस के लिए जो यूज होता है, इसे हम आइसोट्रोपिक रेडिएशंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज सिंपल डाइपोल एंटीना. नाउ डाइपोल एंटीना इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक तो जो ऐसा बीच में ब्रेक्स वाले अवेलेबल होते हैं और एक जैसा स्टैंड सिंगल एज अ होल अवेलेबल होते हैं. तो ये जो आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स होते हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, यानी दैट इज जस्ट लाइक यू कैन से आइडियल चीज है कि ये ऐसा होना चाहिए, बट इन रियल इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच एन आइडियल एंटीना जो इक्वल पावर से हर एक डायरेक्शन में रेडिएशंस भेज सके. सो रियलिस्टिक में जो यूज होता है दैट इज अ डाइपोल एंटीना. डाइपोल एंटीना इज one where it also exhibits radiations in all directions, but they are not equal. See, real antenna, these are real antennas which exhibit directive effects. That is, the intensity of radiation is not same in all the directions from the antenna. अनलाइक आइसोट्रोपिक, इसमें क्या होता है कि रेडिएशन सारे डायरेक्शंस में जाता है लेकिन हर एक डायरेक्शन में सेम इंटेंसिटी से जाए ऐसा जरूरी नहीं है. इट मे हैपन दैट एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेडिएशन जा रहा है, एक डायरेक्शन में बहुत कम रेडिएशन जा रहा है, जो कि एक्चुअल में होता है.
So this antenna, that is simple dipole antenna, is the one which is used in real. The simplest real antenna is a thin center-fed dipole, which is also called as an Hertzian dipole. ये जो पहला वाला है इसको हम Hertzian dipole भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो collinear conductors है और बीच में थोड़ा सा gap है, which is called as small feeding gap. So the strength of this depends on the strength of the conductor, कि कितना strength conductor का है उतना ही ज्यादा वो radiate करेगा. So इसका length is like wavelength by 2, that is also its frequency. बहुत ज्यादा effective radiations होता है ये. Apart from that, if not this, then other radiations can be done from Marconi antenna. इसमें क्या है, ऐसा बीच में gap नहीं है. This is lambda by 2, यानी lambda by 2 over here, and this is wavelength by 2 over here. This is entirely wavelength by 4. तो सिंपल डाइपोल का कंसेप्ट ये है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा लेंथ होगा, बड़ा लेंथ होगा और स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो रेडिएट करेगा. A simple dipole is as shown. See wavelength by 2, यानी ये जो दो फीडिंग गैप्स है उसके बीच में, this is in the xy plane, this is yz plane, and this is xz plane. This type of antenna can only overcome environmental challenges by boosting the power level of the signal. Challenges could be mountains, valleys, buildings, etc. If an antenna is positioned, example in a valley or between buildings, an omnidirectional radiation pattern is not very useful. जैसे हम लोग ने बोला था कि ये डिपेंड करता है कौन से जगह पे, कौन से रीजन में इसको डालना है. अगर किसी वैली पे, हिल पे, बिल्डिंग्स में डालना है, then this omni directional, omni मतलब सिंगल डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देता है. सो इसको मल्टी डायरेक्शनल बनाना जरूरी है. Next is directional antenna. Now this directional antenna are special antennas जिनका काम ही होता है, फोकस्ड ही होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में प्रॉपरली रेडिएशंस भेजे, प्रॉपरली सिग्नल्स रिसीव एंड सेंड कर सके. These are the antennas having particular directions specified for receiving the signal. Directional antennas with certain fixed preferential transmissions and receptions directions can be used. यानी जैसे मैंने बोला था कि ये एक specified region के लिए, specified application के लिए हम specifically इसको एक ही direction में configure करते हैं, so that वो उसी direction से signal sense भी कर सके and signal को receive भी कर सके. The figure is as shown from different planes. How does it look? A special example of directional antenna is considered by satellite dishes. जैसे हमने देखा रहेगा satellites dishes and all, उनका एक specific directions रहता है, एक fixed रहता है. Like if you see there are 3 to 4 satellites, so 3 satellites fixed है orbits में, तो वो satellites जो है वो एक satellite एक ही direction, एक ही region से information लेकर आता है. So those are nothing but directional antennas. Next is sectorized antenna. Now sectorized मतलब क्या है यहाँ पे, कि बहुत सारे डायरेक्शनल एंटीनास को हम कंबाइन करके उसको सेक्टराइज्ड एंटीना बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला एक एंटीना है, ये हमने ये डायरेक्शन में लगाया, ये वाला एक ये डायरेक्शन में, दिस वन इज ओवर हियर. सो इससे क्या हो रहा है, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, एंटायर रीजन्स आर कवर्ड. सो ऐसा हर एक सिंगल डायरेक्शनल एंटीनास अगर हम हर एक डायरेक्शन में लगाए, then that is called a sectorized antenna. So this is a 3 sector antenna. Similarly, you can also have a 6 sector antenna, so which is as shown over here. So these directional antennas when combined together, so that region भी cover हो सके, plus specifically directed भी रहे एक ही region में, so that information properly collect हो, radiation properly जाए, so that constitutes your sectorized antenna. Next is diversity antennas. Now diversity antennas is a combination of 2 or more different types of antennas which we have studied previously. So ऐसा जब हम group use करते हैं, which is general terms we call it as hybrid. एक से ज्यादा स्ट्रक्चर जब हम यूज करते हैं, बी इट डाइपोल एंटीनास लैम्बडा बाय 2 और लैम्बडा बाय 4, जब हम एक से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, सेम टाइप के हो या अलग अलग टाइप के हो, ताकि सिग्नल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, सेंडिंग एंड रिसीविंग में बहुत ज्यादा एरिया कवर हो, बहुत क्लियर फ्रीक्वेंसीज रहे, उसे हम डाइवर्सिटी एंटीनास कहते हैं. Next lecture we'll be studying about what is signal propagation.